29th July, Mohun Bagan Day, a date carved into the heart of Indian football. But this is not just a football story. ये कहानी है उन नौजवानों की जो नंगे पैर थे लेकिन उनके जज्बे उनके ओपोनेंट से बूट से भी ज़्यादा सख्त था। जब फुटबॉल एक मैच नहीं एक आंदोलन बन गया, जब एक इंडियन टीम ने बिना बूट्स के ब्रिटिश एम्पायर के उसके ही खेल में हरा दिया, एंड दैट वन मैच चेंज द इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री फॉरएवर। द ईयर 1911, the Britishers ruled the India. Every institution, from schools to stadiums, echoed with colonial superiority. And football, it was the British game. उनका field, उनका rules और उनकी teams. IFA Shield, one of the oldest football tournaments outside England, was dominated by British regimental teams. Indians allowed to play but win not in their imagination. But then came a club from Calcutta, Mohun Bagan Athletic Club. Formed in 1889, they were more than a club. They were a movement. 1911 का IFA Shield फाइनल, मोहन बागान वर्सेस ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट. ऑन पेपर इट वाज इम्पॉसिबल. ब्रिटिश सोल्जर्स इन बूट्स वर्सेस 10 barefoot Indian players, but on the pitch it became legendary. Let's rewind. The 1911 IFA Shield started like every other year. British teams dominated early rounds, but Mohun Bagan, they were on a mission. First round, Mohun Bagan defeated St. Xavier's. Second round, they shocked Rangers FC by 2-1. Quarter final beat Rifle Brigade 1-0, a massive upset. Semi-final thrashed Middlesex Regiment 3-0. Crowd went wild. और फिर आया वो दिन 29th July 1911, द फाइनल ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट वर्सेस मोहन बागान. आज भी जब कोलकाता फुटबॉल के जिक्र होते हैं, लोग उस मैच को याद रखते हैं. मोहन बागान के 11 प्लेयर्स देश के सपने के बोझ लेकर मैदान में उतरे, एंड दीज वेर देयर नेम्स, लेजेंड्स हु वॉक बेयरफुट इनटू हिस्ट्री. शिवदास भादुरी, कैप्टन, लीडर, विजनरी. अभिलाष घोष, द विनिंग गोल स्कोरर. हीरालाल मुखर्जी, ब्रिलियंट गोलकीपर. विजय दास भादुरी, भूति शुक्ल. सुधीर चैटर्जी, द ओनली प्लेयर विथ बूट्स. राजेंद्रनाथ सेनगुप्त, मनमोहन मुखर्जी, नीलमाधव भट्टाचार्य, कानू रॉय, हाबुल सरकार. ये 11 जवान सिर्फ फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, ये एक सोच के लिए खेल रहे थे. द फाइनल बैटल, 1000 gathered at Calcutta football ground. Indian fans, young, old, students, workers, all came to watch their heroes. First goal came from East Yorkshire Regiment, 1-0. British crowd celebrated, but Mohun Bagan didn't panic. Shivdas Bhaduri scored the equalizer, 1-1. The Indian section of crowd roared Bande Mataram, echoed in the sky. 76 minutes, Shivadas made a brilliant run, pass to Avilas, and goal 2-1. Barefoot Indians had taken the lead. The final 10 minutes were war. British team attacked aggressively, but Hiralal Mukherjee, the Indian goalkeeper, stopped every shot like a wall. Final whistle बजता है. The history is made. मोहन बागान टू ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट 1. पूरे देश में एक ही बात था, इंडियंस ने ब्रिटिश को हरा दिया. This was a turning point of Indian pride. From Bengal to Bombay, students and revolutionaries celebrated the victory. Rabindranath Tagore, nationalist leaders and newspapers called it a freedom match. That one win proved if we can beat them in football, we can beat them in anything. Mohun Bagan became the first Indian club to win the IFA Shield, the only one to do it barefoot. Even today, outside Mohun Bagan's club tent in Kolkata, you will see a bronze statue, 11 barefoot warriors, all immortalized. वो सिर्फ मूर्तियाँ ही नहीं है, वो याद दिलाता है कि आज़ादी के लिए लड़ना सिर्फ तलवार से नहीं होता, कभी कभी फुटबॉल से भी होता है. 29th July, now celebrated every year as Mohun Bagan Day, not just to remember a victory, but to honor the spirit of Indian resilience. मोहन बागान के उस जीत ने देश को एक नया जज्बा दिया. Today's players may wear boots, jerseys, play in fancy stadium, but the fire वो आज भी जिंदा है. So next time someone tells you India doesn't have a football story, just whisper 1911. 29th July, the day India kicked the British Empire barefoot. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.